Shall we start, ma'am? Yeah, sure. I welcome all the participants to the session 3 of this AICT sponsored one week online short term training program on water quality complication, restoration, and environmental conservation of existing water bodies. Module 2. Anuja ma'am is the director of Unique Envicare Private Limited with total 15 plus years of experience, which encompass over the environmental quality aspects. She is an environmental professional expert, NABED qualified from Quality Council of India. She is an accredited consultant for various sectors like mining, river valley, building, large constructions, township, and area developments. She also won the Real Woman Award 2021 Pune chapter. They basically recognize the contribution of women in the construction industry. I welcome you, ma'am, on behalf of IPS Academy, Civil Engineering Department, Institute of Engineering and Sciences, Indore. Highly honored by your presence, and I request you, ma'am, to please proceed with the session. Thank you very much, Devanshi. So, hello everyone. This is Anuja Karhu, as Devanshi ma'am was already mentioned. So, am I audible? I just wanted to understand. Am I audible properly? Yes, ma'am, you are clear. Okay. And before starting my session, as ma'am already introduced me, so I'm the environment consultant, majorly dealing with the construction, mining, and river valley projects, and accredited and working in this field since 16 years, last 16 years. So first of all, I just wanted to mention that I would like to prepare this section as a completely interactive section. So interactive sessions, if it will be helpful. It will be helpful for me if all of you can raise your hand and reply on the questions, and then we can make this entire session would be little bit interactive and entertaining, yeah, as well. So I wish everyone will reply on the questions if I would ask something. So I just wanted to mention that I'm doing water wastewater treatment plant design and execution as well, along with the environmental consultancy. So today I'm going to cover the water and wastewater technologies detailing and what are the trending things are going into the environmental and construction field majorly. As you are from civil area background, so I would like to cover up the construction area for the particular session. So, can I share the screen? Yes, ma'am, please. Yeah, thank you. My screen is visible? Yes, ma'am, it's visible. Yeah. So, we will start with the presentation today. As Meetu ma'am already mentioned that about my introduction, so I would not go on this. I'll just make the full screen first of all. Is it full screen? No, ma'am, not from here. I think there is some problem with my system. I'll just make the largest screen. Today, along with me, my design engineer is also with me to answer on your few queries regarding the designs of the things.
So as I mentioned, this is my small portfolio. This is my small introduction. So considering the environment, what majorly water and wastewater treatment and the reuse of waste treated water, that is major concern these days we are facing in the areas of construction. So, so first of all, we'll go with the source of water, source of water and wastewater treatment. So according to everyone, so what are the? So I have mentioned the source of water. What are the rest of the source of water? You can find out. See, first of all, we can see the human waste, which is the major source of water for municipal areas. Then just a minute, I'll just make this. So source of water is first of all our human waste. So whatever the water we are using in our daily to daily basis, that is for the cooking, washing, then bathing, then all the waste are going into the sewer lines only. So this is the major source of water these days we are facing. Then wastewater from various if the water is coming from the road, then rest of the impurities is mixing in with the water, and that water is going to be that going to into the drain. That is also a major source of water. Then again rainfall collected from the roof yard. That is if they are contaminated, then that is also a source of wastewater majorly. Then industrial waste, everybody knows that industrial effluent generated is also a major part of wastewater. Then domestic, everybody knows that. Then highway drainage. The highway drainage, if the water is coming from the highway, then highway, if there is oil spillage, leakage would be there, then the water is contaminated, is again we called as a wastewater. So now I would like to ask any of your person that what is sewage according to you? Can somebody answer on that? Any of the As I participants? mentioned, it should be the interactive session. Anybody? Ma'am, whatever water we use and then Hello. discard, that is called as sewage. Ma'am, can you hear me, ma'am? Hello, Devanshi, am I audible? Ma'am, you are audible. Am I audible, Hello. ma'am? Ma'am, am I audible, ma'am? Hello, Devanshi, am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Am I audible, ma'am? Cannot hear you. Can I join again once? Yes, ma'am, please. I hope I'm audible to the participants. Can the participants hear me? Participants, can you hear me? Yes, ma'am. Okay, thank you. Browser on meeting. Am I audible now? Yes, ma'am, you are audible. Am I audible? Yeah, you are audible. I could not able to hear anything from your side. Might be network problem, ma'am. Maybe. So shall I start again? Ma'am, you can continue with that slide, sewage slide. Yeah.
Yeah. So according to everyone, I just wanted to understand what are the sewage. What is the sewage according to you? Ma'am, Can someone? basically the water which we use and discard, that is sewage. So sewage actually majorly is the wastewater which is originating from the homes or places. From, as I mentioned, it is a kitchen waste, as you can see in the picture. It is laundry Um, waste. Ma'am, your screen is not shared, ma'am. Oh, how come? There is some issues from my side, I guess. Now is it okay? Yes, ma'am. Now it's appearing. Yeah. So as I said, what is sewage? So according to this, the sewage is majorly the wastewater which is majorly originated from the home. So it is a kitchen waste. It, as mentioned in the picture, it is a laundry waste. It is waste from the wash basin we are getting. See if you can see this. Then bathroom waste, toilet waste. In one word, it is human waste. So where does it all go? So any if anyone can answer me, if whatever the water we are using in our daily to daily basis, then 90% of water is going into the sewage. So we are just what the water we are consuming, it is only consumable, and rest of the 90% water which we are using daily is going into the drain. So whenever you flush the toilet and the water content, it will go into the sewer line. See, as you can see in the picture. Again, your washing areas, your bathroom waste, your basin waste is going to the sewer line. So showing all these things, I just wanted to mention. So we need to understand the treatment need of the wastewater. Majorly treatment need, because what are the water we are using for example, we are using 100 liters of water in a day. So 90 liters of water is we are sending it to the wastewater stream. So we are sending it into the drains. So we need to understand the requirement of wastewater treatment plants these days, because these days major of the areas, entire India is facing major water crisis in the various different regions. As in Maharashtra, the Latur, then that Buldana, that the Khamba areas, and these areas facing water crisis like anything. They are getting fresh water in 15 once in a 15 days. So just wanted to tell you that need of wastewater treatment plant is so much in this area, and the awareness of the wastewater treatment and utilization is very much needed in the current scenario. So this is the major lines where the every home is generating a particular amount of water, which I'm coming on this key. What are the question? What are the calculation for that? So these are the wastewater is generating from various sources, and we are sending it into the drain. 90% of water we are sending it into the drain. So what is the effect of wastewater pollutants? Can someone answer on this? Any students? I would expect a reply from some student. Hello. Right. Participants, please, if you can answer the question. I would suggest कि this session should be like more on the Hmm. interactive session, क्योंकि अगर मैं presentation देते रहूंगी और everybody will only listening to that, so वो कुछ मजा नहीं आएगा उस session में. अगर आप उसको आंसर करते रहोगे तो थोड़ा सा मुझे भी एक lively लगेगा कि yes, I'm delivering something to someone. So any of you, what is the effect of wastewater pollutants? Yes, Devanshi ma'am, participants. I guess, I Yeah. guess participants are just connecting. Yeah, actually, participants these days are a bit hesitant in speaking. You can even type in the chat box if anybody is Yeah, not. you can type in the chat box as well. That would be more appreciated.
So if you So can please type the answer in the chat box that what would be the effect of pollutants, wastewater pollutants basically. it's okay. You just type it. I'll just elaborate from my side. So majorly what happens when the wastewater is without treatment, if it comes to the direct stream, what it will create a problem. We need to understand that. First, that is a major problem. Our natural water bodies. If rivers are there, the river flows and it goes. But sometimes it so happen we let the wastewater without treatment into some canals, into some lakes, into some areas where the water is not getting recycled, where the water is not getting proper treatment, where whether the water is not getting proper output of that. So And probably this is the reason why these days a lot of canals, lakes, and rivers are getting polluted, and yes, we are unable to take such a large volume of so much water. of lakes, so much of lakes. These days, we are like working on some restoration work on the lakes. So much of, even if the STP is there, so much of lake are getting polluted with the wastewater. So people are like taking the sewage treatment plant and not even using that and letting the wastewater into the lakes, and the lakes are getting very much polluted. That is Yeah, why even the the sewage treatment plants are also not working well as yes, it is not expected. working well. It is not working well. And even if people don't want to use it, because the electricity requirement and all the things are there, people even don't want to use that. But if the even if the machineries are there, so majorly what it is doing, it is decaying the organic matter and debris of the particular area, particular source where we are letting the water. See, you can see the, मैं I would say कि क्या हालत हो गई है उस लेक की. This is the lake. ये लेक में यहाँ पे people are letting the solid waste and waste water as well without treatment. If the water is there, अगर आपने देखा होगा कहीं water hyacinth तैयार होता है, पूरा river पूरा ये water hyacinth से भर जाता है. So ये major concern होना चाहिए if you come to know about such kind of rivers, and you should create a being an engineer, आपने इस पे concern open करना चाहिए कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे. So this way the natural sources are getting disturbed. Excessive nutrients such as phosphorus, nitrogen, which are the toxic for aquatic organism, is majorly promoting into the excessive plant growth and reduce the available oxygen. यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे excess ये तैयार होने की वजह से ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट ऑफ है जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को चाहिए वो कम हो जाता है. So see, due to that, what is happening? That fishes and everything is dying. Aquatic organism. Even बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो होता है अपने वहाँ पे birds आते हैं. बहुत बार आपने देखा होगा फ्लेमिंगो कहीं एक areas में होते हैं. एक particular time के बाद में वहाँ पे गंदा पानी जमा होने की वजह से that फ्लेमिंगो वहाँ पे आके वहाँ पे रुकना और वहाँ पे migratory time बिताना वो भी कम कर देते हैं. अभी फिलहाल रिसेंटली वी हैव विजिटेड वन लेक वेयर पिछले 10 सालों में वहाँ पे पहले फ्लेमिंगो आते थे ना. अभी उन्होंने वहाँ पर पानी इतना गंदा हो गया है कि वहाँ पे लोगों ने आना बंद कर दिया, मतलब फ्लेमिंगो वहाँ पे आना बंद कर दिया. सो ये एक ऐसी चीजें हो रही है जो हमको सीरियसली बीइंग एन इंजीनियर हमको इस पे कंसर्न रखना चाहिए. So these are the effects. Everybody knows that these are the effects on the natural resources, which is due to the wastewater. So what is the wastewater treatment? So treatment क्या होता है? What is the wastewater treatment? We need to understand first of all that. So sewage treatment is the contamination, whatever the contamination is there due to the municipal waste. We are with the treatment, we are reducing that contamination and making that water should be utilized for further utilization of flushing or gardening purpose. सो उसके बाद में व्हाट आर द वाटर जो वहाँ पे तैयार होता है, दैट स्लरी, दैट स्लज इज आल्सो कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कंपोस्ट फॉर पर्टिकुलर लैंडस्केप एरियाज. This thing has to be aware, create the awareness about this, and we have to spread it over the in community. So
सो लेवल्स क्या होती है, सीवेज ट्रीटमेंट की लेवल क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द सीवेज लेवल्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट्स. So first of all, we can do the natural treatment, that is called a primary treatment to particular sewage which is coming to the stream. Then उसमें क्या 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 होता है? In that particular primary treatment, we remove the floating matter. As you can see this, we are removing the floating water and floating matter. वहाँ पे ग्रिड दिया हुआ है, ग्रिड चेम्बर दिया हुआ है, and the floating matter is going further. In the secondary treatment, that is called a biological treatment. In the biological treatment, degradation of organic matter by aeration it took place into the wastewater treatment plants. So you can see the image of that. Aeration happens and it is a biological treatment process. Then tertiary treatment. This tertiary treatment means the chemical treatment, where filtration and disinfection takes place. You can see that these are the chambers where the filtration of the treated water from primary and secondary stages. Tertiary comes with the chemical treatment, and वहाँ filtration and disinfection होता है, and we will get this treated water from the particular plant. So what are the technologies of STPs these days are majorly available into the market and which are popular into the market, which is according to the requirement of the plant, according to the requirement of the area spaces. So preparation of any plant requires the spaces, areas, and the n number of things are which is impact on the design of the STP. Considering the being engineer, you need to understand कि आपको वहाँ पे अगर STP डालना है, अगर आपको वहाँ पे STP इंट्रोड्यूस करना है, you need to understand the area requirement of that particular STP. You need to understand the levels of inlet is coming, the levels of outlet is coming, how the water is coming to the plant, and how that entire plant is going to be constructed. So in these days, majorly MBBR, that moving bed biofilm reactor, MBBR we call it in short. Then this is the MBBR process. You could be able to see that. Then another technology is called MBR, that is membrane bioreactor. This is membrane bioreactor. You can see into this. इसके डिटेलिंग में भी हम आगे जाएंगे according to the slides and all. This is third technology which is quite popular in these days is sequential batch reactor, that is SBR. It is very much popular into the southern areas like Karnataka, और यहाँ पे people are more preferring their SBR. Or for the bigger plants, is SBR is the more known and popular technology. This is the SBR system. Again, is constructed wetland system, that is called also a phytorid system. We can say this is natural system for the primary and secondary treatment, and tertiary treatment we have to use the, again as I mentioned, filtration and disinfection. With the tertiary treatment we have to provide with this. So if you can see, this is the treatment where the natural plants are filtering the water and sending it for the tertiary treatment for the chemical treatment itself. So again, regarding the MBBR and the technology detailing, I would hand over my technical engineer. She will explain कि क्या क्या होता है MBBR technology में. Yeah. I would introduce Miss Sankita, and she is our design engineer. आपको एक MBBR in short क्या होता है, she will explain. Hello ma'am, welcome. Yes, hello ma'am, thank you. MBBR टेक्नोलॉजी अभी आपने जो देखे पिछले स्लाइड में जो 4 टेक्नोलॉजी बताए हुए थे मैम ने अभी एक्सप्लेन जो किए, उसमें अभी जो ऐसा 4 एरियाज के कंस्ट्रेंट लेके, जैसे कि स्पेसिंग,
कैपिटल कॉस्ट, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, अभी जो मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जो मैक्सिमम लोग यूज कर रहे हैं, वो एमबीपीआर टेक्नोलॉजी है। एमबीपीआर टेक्नोलॉजी में होता क्या है कि यहाँ पे जो पिछली स्लाइड में दिखाया था, मैं फिर से वो स्लाइड लगा रही हूँ। कि ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, यहाँ पे जो आपको एमबीबीआर लिखा हुआ है, वहाँ पे जो छोटे छोटे ब्लैक कलर्स के मीडिया दिखे, उसमें क्या होता है कि एक टैंक जो आता है एमबीबीआर में, उसमें एरेशन देके ये मीडिया वहाँ पे डाले होते हैं। इसलिए इस मीडिया की वजह से उस टेक्नोलॉजी को नाम दिया हुआ है एमबीबीआर टेक्नोलॉजी करके। और इसमें होता क्या है कि जब आप कंटिन्यूस एरेशन देते हो तो बैक्टीरिया उसमें बैठ जाते हैं, कि मतलब जो भी ऑर्गेनिक मैटर सीवेज में चला आता है वो डाइजेस्ट करने के लिए ये मीडिया का बैक्टीरिया एज अ होम इस्तेमाल करते हैं। जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मीडिया है उसके ऊपर बैक्टीरिया बैठ के पूरा डाइजेशन करते हैं, और उसके बाद में आपको स्लज, जिसको डाइजेस्टेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसको बोलते हैं स्लज, वो प्रोड्यूस हो जाता है। उसको फिर से निकालने के लिए आप आगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते हैं, उसमें क्लेरिफायर दिया होता है। मैं आपको अभी प्रोसेस फ्लो डायग्राम जो है एमबीबीआर की, मतलब जैसे सिवेज इन होता है तो आउट होने तक जो भी ट्रीटमेंट होती है उसमें, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। इफ एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, प्लीज ask me. You can text also. Is it visible to all this diagram? It's visible to me, ma'am. Participants, is it visible to you? Yeah, it might be noise for me. It might be if you are okay with it, then also. Yeah, रॉ सीवेज as मैम told कि रॉ सीवेज में क्या होता है कि अपना बाथरूम वेस्ट है, टॉयलेट वेस्ट है और अपना किचन वेस्ट जो भी है, मतलब आप होम हाउस में बैठ के जो भी आप वर्कआउट करते हो, जो भी काम करते हो, उसमें जो भी वेस्ट वाटर आता है उसको एक चैनल बना के, जिसको बोलते हैं ड्रेनेज लाइन सिस्टम के थ्रू वो एसटीपी प्लांट में, मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसका हम बोलते हैं रॉ सीवेज फर्स्ट स्क्रीन चेम्बर में आता है। वहां पे होता क्या है कि जो फ्लोटिंग मैटर से, मतलब जो आपका कोई भी क्लॉथ्स हो, कोई कपड़ा हो, या किचन से कोई निकला वेस्ट हो, जो अभी आपके ड्रेनेज लाइन के थ्रू एसटीपी में गया हो, तो उसमें वो निकल जाता है। इसके थ्रू जो स्क्रीनिंग हो जाती है, बाद में अपना वाटर जो सीवेज है वो फ्लो करके जाते हैं इक्विलाइजेशन टैंक में। तो इक्विलाइजेशन टैंक में होता क्या है कि जो भी तीनों कंटेंट्स, तीनों सोर्स से जो कंटेंट आ रहे हैं उस पे एरेशन देके इक्वलाइज किया जाता है। इक्वलाइज इज नथिंग बट न्यूट्रलाइजिंग। सो हमें जो प्रोसेस करनी है, बायोलॉजिकल प्रोसेस करनी है मेनली एमबीपीआर में, उसको सीवेज जो मिले वो इक्वलाइज हो, कि कहीं से भी हम अगर सैंपल लेते हैं तो उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं कि रॉ सीवेज कितना पोल्यूटेंट है या अपना वाटर जो है कितना पोल्यूटेंट है, वो होते हैं पीएच, BOD biological oxygen demand, COD chemical oxygen demand, total suspended solids and phosphorus and nitrates। जो भी अभी मतलब सिविल इंजीनियर स्टूडेंट हो तो आपके वो प्रोसेसेस वगैरह होता है, और मतलब मैं खुद केमिकल इंजीनियरिंग हो और मेरे जो मतलब स्कूल जो अपने रूममेट वगैरह थे तो सिविल के थे, तो मैंने देखा था कि आपको भी ये वाला पार्ट होता है, BOD चेक करना है, COD चेक करना है, ऐसा प्रैक्टिकल्स वगैरह भी आपके होते होंगे। सो यू माइट नो दिस पैरामीटर्स। सो एरेशन में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर जाते हैं और आगे पास ऑन कर जाते हैं कि वो सेटल हो जाए। तो उसमें हमने नाम दिया है कि ट्यूब सेटलर टैंक। इसमें होता क्या है कि जो भी स्लज होता है वो डाउन में, मतलब जहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है, जो ऑरेंज कलर का पंप दिखा हुआ है, वहां पे सेटल हो जाते हैं और हम वो बाद में निकाल लेते हैं। और जो अपना फिल्टर्ड पानी है वो फिल्टर फिर टैंक में चला जाता है बाय ग्रेविटी फ्लो। वहां से हम पंपिंग करके फिल्ट्रेशन, जो कि अपने टर्शरी ट्रीटमेंट है, वहां पे हम सेंड करते हैं उसको। और बाद में वहां पे दो फिल्टर्स लगाए होते हैं जो कॉमनली है, प्रेशर सैंड फिल्टर, जहाँ पे वेरियस ग्रेड के सैंड इस्तेमाल होते हैं कि जो फिल्टर कर सके, वहां से मेजरली पीएसएस रिमूव होता है। जो नेक्स्ट अपने फिल्टर है उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कार्बन वेसल। वहाँ पे ओडर और स्मेल निकाला जाता है, जैसे कि कार्बन की खुद की प्रॉपर्टी है कि वो कलर और स्मेल एब्जॉर्ब कर जाता है।
और कार्बन का जो क्वालिटी होता है वो आईवी से हम डिसाइड करते हैं कि कितने आईवी का लेना चाहिए। जैसे कि अगर अपना ये डोमेस्टिक ट्रीटमेंट का प्लांट है तो यहाँ पे 600 से 900 आईवी तक के कार्बन चल जाते हैं। पर अगर हम इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या केमिकल या फार्मा इंडस्ट्री हो, वहाँ पे हमें 1200 आईवी के ऊपर के कार्बन लेने पड़ते हैं। तो ये डिपेंड ऑन है कि वेस्ट वाटर कौन सा है। वहाँ पे अगर फिल्टर के बाद, एक्टिवेट कार्बन फिल्टर के बाद ये फिर हम पानी स्टोर करते हैं। जैसे कि ये ट्रीटेड मतलब ट्रीटमेंट किया हुआ पानी है, तो इसके लिए यहाँ पे हम डिसइंफेक्शन सिस्टम देती है। डिसइंफेक्शन सिस्टम 3 टाइप के होते हैं, उसमें 2 क्लोरीन टाइप बेस है और एक है जो रेडिएशन बेस है, जिसमें क्लोरीन डोजिंग रहता है और ओजोनेशन रहता है, और थर्ड वन इज यूवी। तो उसमें ये आपको तो मतलब सिविल इंजीनियर के बंदों को मालूम तो होता ही है, जैसे कि मैंने भी पढ़ा है ये वाले बात। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं सर। मैम जो एरिएशन टैंक है वही एमबीबीआर है? यस मैम। जो एरिएशन टैंक है वही मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर है? यस, एक्चुअली मैम है क्या कि जो मैम ने बताया एसबीआर, एमबीबीआर, एमबीआर और सीडब्ल्यूएस, ये सभी मतलब सीवेज ट्रीटमेंट के टाइप है, पर वो डिफर सिर्फ ये जो एरेशन टैंक मैंने दिखाया ना अभी। हेलो। यस मैम। हेलो। हाँ, यस जो मैम। ये एमबीबीआर का टैंक दिखाया ना, सिर्फ मैम होता क्या है कि अगर मैं एमबीबीआर के टैंक के यहाँ पे अगर एसबीआर का टैंक लगा दूं तो वो एसबीआर की ट्रीटमेंट हो जाएगी। ओके, तो बस ये एक यूनिट चेंज हो जाएगा मैम? यस। हाँ, तो अभी मैं यहाँ पे अब थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे जो बोला लेवल्स बोले थे प्राइमरी ट्रीटमेंट के, यहाँ से रॉ सीवेज इनलेट चैम्बर से इक्विलाइजेशन टैंक तक, ये हमारी प्राइमरी ट्रीटमेंट है कि जहाँ पे नेचुरल बेस में हम ट्रीटमेंट कर देते हैं। बाद में की जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट बोली थी, जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोली थी, जो जहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट वहाँ पे एरेशन से स्टार्ट होते और फिल्टर फिर टैंक तक। और जो टर्शियरी ट्रीटमेंट है, जहाँ पे फिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन का एक्टिविटीज होती है, वो अपने फिल्टर से ट्रीटेड वाटर टैंक तक की है। और जो टेक्नोलॉजी का जो डिफरेंस आता है ना, वो सिर्फ सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे डिपेंड होता है कि सेकेंड ट्रीटमेंट आपने जो इस्तेमाल की उस टाइप का वो प्लांट है। सो इजीली एनीवन कैन ये understand the technology from this process flow diagrams. Yes ma'am, got it. The next one is membrane bioreactor. यहाँ पे होता क्या है? Just I just wanted to mention again, Devanshi, I'm just explaining all the presentation to a interactive language, so that I would expect the entire students from your college would understand, and they would be more interacted with us. So I would suggest again to people will get interacted with us. So that is why we are explaining in our regular talking languages. So further she will explain about the MBR. I would again mention that if the student will interact with us, it would be more helpful for them as well. Yes, please participants, please be interactive. Even if you're not willing to speak, please type in the chat box. Yeah. So MBBR she will explain further. Anything there is in the chat box, I would not able to see. If Devanshi ma'am, can you just Yes, let yes. me know if anything is there into the chat box? Yeah, ma'am. As of now, there is nothing, but if there is, I will let If you there know. is something, then do let me know. Surely, ma'am. Yeah, sure. Now, Sangeeta will explain you on the MBR. What is the MBR technology? जैसे कि मैंने पहले बोला कि जो टेक्नोलॉजी है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे डिपेंड करती है। अभी जो मैं आपको 4 ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ वो पूरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट ही है, कि जो सिर्फ होल प्रोसेस फ्लो चार्ट में चेंज होते रहते हैं। तो मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमने अभी मीडिया, जो ब्लैक कलर का मीडिया मैंने अभी दिखाया वो इस्तेमाल किया, उसके जगह पे मेम्ब्रेन लगाए होते हैं। जैसे कि आपको रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम मालूम होगी, उसमें जैसे मेम्ब्रेन होते हैं उसी टाइप के, सिर्फ उनका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग रहता है, वैसे मेम्ब्रेन लगाए हुए रहते हैं और इसलिए इसको मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर बोलते हैं।
तो अभी इसमें क्या है, यहाँ पे मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर, आपको इसमें बताती हूँ। यहाँ पे जो 5 नंबर का दिख रहा है ना, यहाँ पे अपने मेम्ब्रेन सबमर्ज किए हुए, जो क्या होता है कि एरेशन टैंक में मेम्ब्रेन सबमर्ज किए होते हैं, जैसे कि रिवर्स ऑस्मोसिस में होलो या स्क्विल साइड टाइप के मेम्ब्रेन रहते हैं। मैं आपको इसका प्रोसेस, और द थर्ड वन इज कंस्ट्रक्टिव वेटलैंड सिस्टम्स। यहाँ पे क्या होता है कि कंस्ट्रक्टिव वेटलैंड मींस नेचुरल सीवेज ट्रीटमेंट। यहाँ पे हम जो प्लांट्स है उसके उसके इस्तेमाल करके हम ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि जैसे हमने घर के यहाँ पे वगैरह देखा होगा। या प्रीवियसली इफ वी नो दैट दी हमारे घर के पीछे जब एकदम पुराना जमाना था, वहाँ पे एक कुछ पर्टिकुलर प्लांट लगे होते हैं, वो जो नेचुरली अपने वेस्ट वाटर को क्लीन करते थे. So this is the technology which is majorly developed by the NERI, and further it is changes into the constructed wetland thing. So this is the process which is called natural wastewater treatment process, where these plants, that particular plants are there. These plants, can you tell the name of these plants? Yes, these plants like taifa, elephant grass, or cypress, we can use such a plant which has a hollow stream or hollow roots that can use and that can utilize the nitrogen and phosphorus from the wastewater. And that way the water is getting treated and further send it to the tertiary treatment. So, ma'am, the wastewater can be directly taken to these wetlands, or do they require some preliminary treatment? They need primary treatment. This is secondary Okay. treatment first. Primary treatment they need. We need to, like, this is the schematic for the particular system. So we need to construct, say, around 8 different tanks for that. So these tanks are giving us the primary treatment, and after that outlet, it is going to the bed, that bed which I have shown here. This is the bed where the outlet of that 8 tanks is coming to this bed, and after this bed, that particular water is goes for the tertiary treatment. So according to the schematic, you could able to see that. This is the schematic. So this is the schematic for the particular CWS technology. So these days, this technology is quite popular in our area, where the people are wanted to use the area. But that is the only problem with this technology, that we need a larger space, little bit larger space than the regular MBBR and technologies. So using of this technology, we are reducing the electricity requirement of particular area, particular society or particular residential areas. So these days we are introducing and promoting this technology majorly to utilize the wastewater and to treat the wastewater, and minimizing the electric requirement of that particular project. So she will Ma'am, explain. I have a question, ma'am. Ma'am, how is this related to the electric requirement? So if you can see in the MBBR technology, see, just go to the MBBR technology first of all. So if you can see in the particular these two areas where the aeration tank is there, we need to introduce, we need electricity to We need a mechanical part to introduce to air in the aeration tank, which is called air blower. And for the 100 kg of STP, we require around 10 HP's blower. And we have to on this blowers in regular basis for 24 hours. So electricity charges for this treatment is higher than CWS. Here into the CWS plant, we need not these secondary treatment, which I am just ruling it out. This treatment we need not for to mention over there. So the electricity requirement for the air blower is reducing. So majorly due to the CWS, our electricity requirement is comes to 10%.
बस यहाँ पे अपने को 24 आवर्स वो एयर ब्लोअर चलाना पड़ता है, उसका जो इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट होता है वो इतना कम हो जाता है कि सीडब्ल्यूएस प्लांट चलाने के लिए हमको 10% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगता है इंस्टेड ऑफ एमबीबीआर. Okay. Okay, ma'am, got that. So this is just SBR technology. और जैसे कि मैम अभी मैंने नाम यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिक्वेंशियल बैच रिएक्टर, जो भी बाकी 3 ट्रीटमेंट है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस करते हैं, पर जो ये सिक्वेंशियल बैच रिएक्टर है वो बैच बैच चलती है. इस एसबीआर का एक एक बैच 6 से 10 आवर्स का रहता है. यहाँ पे होता क्या है, मैं कुछ स्कीमेटिकली दिखाती हूँ कि यहाँ से जो मैंने पहले एमबीबीआर के प्रोसेस फ्लो में एक्सप्लेन किया कि जो नेचुरल ट्रीटमेंट है, प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होती है, फ्लोटिंग मैटर्स वगैरह निकाले जाते हैं और फिर बाद में इक्विलाइज सिस्टम में आके जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में पास आउट होता है. तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट यहाँ पे है जो बैच में है, और यहाँ पे होता है कि फिल एंड ड्रॉप जैसे सिस्टम है. जैसे कि अगर मैंने एक फॉर एग्जांपल लिया कि 8 घंटे का ये बैच ट्रीटमेंट है, तो यहाँ पे मेरा पहले 2 घंटा फिलिंग होगा, बाद में मुझे 4 घंटे उसी टैंक को जो एरेशन देके रिएक्ट करने के लिए रखना पड़ेगा. फिर बाद के 1 घंटे में मुझे वो सेटल डाउन करना है, मतलब जो भी स्लर जनरेटेड हुआ है उसमें सेटल हो जाएंगे पार्टिकल्स, और जो मेरी फोर्थ होगी जो ड्रॉ होगी, और फिर से मुझे फिफ्थ जो स्टेप होंगे कि मुझे फिर प्रोसेस में लेने के लिए मुझे सिस्टम को तैयार करना है. तो ये जो सिक्वेंशियल बैच रिएक्टर प्लांट की जो सिस्टम रहते हैं वो बैच बैच रहती है, कि जैसे कि बाकी जो 3 सिस्टम बताए वो कंटिन्यूअस फ्लो में रहते हैं. और अभी जो हमें म्युनिसिपल के या गवर्नमेंट के जो ज्यादातर प्लांट है जो एमएलडीज में होते हैं, 5 एमएलडी, 10 एमएलडी, अराउंड 20 एमएलडी, वो सब अभी एसबीआर प्रेफर कर रहे हैं. नेक्स्ट, yes, Process flow you as can see mentioned. this process flow diagram. So collection टाइम के बाद में डायरेक्टली एसबीआर का एक ही टैंक होता है जिसमें ये 5 प्रोसेस कंटिन्यूअस मतलब साइमल्टेनियसली कैरी आउट हो जाते हैं. तो अभी क्या होता है कि मैम एमपीबीआर में हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग टैंक देना पड़ता है, पर यहाँ पे एक ही टैंक में ये 5 प्रोसेस हो जाते हैं. इसलिए यहाँ पे एसबीआर को जो स्पेस रिक्वायरमेंट है वो कम है कंपेयर टू एमपीबीआर. That is why it is more popular into the MLD areas, and the result is also good in the SBR system. यस, एंड नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाना चाहती हूँ कि जो मेन एरियाज है कि किस बेस पे हम टेक्नोलॉजी डिसाइड कर सकते हैं. तो ये जो पॉइंट्स है, यहाँ पे जो मेजर पॉइंट होते हैं कि जब टेक्नोलॉजी लेनी है तब डिस्कस किए जाते हैं कि एरिया रिक्वायरमेंट कितना है. जैसे कि एरिया रिक्वायरमेंट एमबीबीआर में अगर मैंने समझो कि 100 केएलडी का प्लांट लिया तो मुझे एक 50 मीटर स्क्वायर की जगह लगेगी. एमबीआर में उससे भी मुझे 30 मीटर स्क्वायर जगह लगेगी. एसबीआर में मुझे जगह 30 मीटर स्क्वायर लगेंगी, पर मुझे डेप्थ जाना ज्यादा लेना पड़ेगा 3 मीटर से ऊपर. तो अगर मुझे डेप्थ मिल रही है तो मैं एसबीआर वहां पे कर सकती हूँ. अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी बचानी है, इलेक्ट्रिसिटी कम करना है, तो मैं वेटलैंड सिस्टम लूंगी, पर वेटलैंड सिस्टम में मुझे जगह जो स्पेस रिक्वायरमेंट हो 2.5 टाइम्स मोर देन एमबीआर. मतलब जो अगर मुझे 100 केएलडी का प्लांट है तो 150 मीटर स्क्वायर मुझे जगह लगेंगी. जैसे कि मैंने सेकंड फिफ्थ पॉइंट पे मैंने लिखा है कि जो इलेक्ट्रिकल कंजप्शन है कंपैरेटिवली वेटलैंड सिस्टम का लेस है कंपेयर टू एमबीआर एंड अदर टू टेक्नोलॉजीज. और ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कॉस्ट, इलेक्ट्रोमैकेनिकल में जो इक्विपमेंट्स आते हैं जैसे कि पंप हो, ब्लोअर हो, डिफ्यूजर है या पैनल है, केबलिंग है, इसका जो भी कॉस्ट रहता है उसका कंपैरिजन दिया हुआ है. जैसे कि वेटलैंड में सिर्फ 2 ही पंप लगते हैं कि जो एमबीबीआर सिस्टम में 8 से 10 पंप लगते हैं, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल कॉस्ट भी कम आती है. थर्ड वन इज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट. अभी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल पार्ट है तो उन्होंने मेंटेनेंस तो आता ही है, और उसको ऑपरेट करने के लिए भी एक बंदा वहां पे रखना पड़ता है, तो वो भी कॉस्ट हो जाती है. पर जैसे कि हम देख सकते हैं इस चार्ट में कि एमबीबीआर और एमबीआर और एसबीआर में मुझे हायर मॉडरेट एनुअल कॉस्ट लग जाती है, पर वेटलैंड में लेस लगती, क्योंकि वहां पे 2 ही पंप है और वो जो सिस्टम है कोई भी अनस्किल्ड पर्सन भी चला सकता है. इवन हम क्या करते हैं, हमने जहां जहां पे दिया है ये वेटलैंड सिस्टम, वहां पे हम वॉचमैन हो या होम केयर वाले पर्सन हो, उनको हम सिखा देते हैं. वो
ज्यादातर 10 या 15 दिन में वो सीख भी जाता है, टेक्नोलॉजी इतनी आसान है। द फोर्थ वन इज सिविल कॉस्ट। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अगर मतलब जैसे टैंक साइजेस बढ़ेंगे वैसे सिविल कॉस्ट बढ़ेंगी। जो एमबीबीआर में क्या होता है कि हमें टैंक साइज जो है वो समझो मुझे 8 टैंक लगते हैं, तो एमबीआर में मुझे सिर्फ 3 ही टैंक लगते हैं और एसबीआर में मुझे 4 टैंक लगते हैं। पर कंपेयर टू वेटलैंड, वेटलैंड में मुझे एनारोबिक सिस्टम के लिए 9 टैंक और बाद में प्लांटेशन बेड, इसलिए मुझे मेरी वहां पे सिविल कॉस्ट बढ़ जाती है। पर कंपेयर टू ऑल दिस थिंग्स मेरी मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन कॉस्ट वहां पे लेस है। अगर मैं मेरा कंसर्न ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है और मेरे पास स्पेस है एंड आई कैन इन्वेस्ट सिविल कॉस्ट, देन यस आई विल ग्रो द wetland system. For example, into the institutes or hospitals, we can use that particular system where we can get the higher space and the maintenance cost can be reduced, because the institutes and all these things cannot be afford that particular higher operating costing for particular technology. So we would suggest further to go with the wetland system. मैम एफिशिएंसी वाइज इन सारे जो मेथड्स थे उसमें से बेस्ट कौन सा था मैम? See, it is not like हम किसी टेक्नोलॉजी को बेस्ट ऐसा नहीं बोल सकते. See, ultimately the requirement of particular things, and anyways, according to the STP is a major thing which has to be maintained properly. Okay. So any of the system can work like anything, but people are not maintaining that particular system, operating properly, not operating the system. That is why STP things are getting failed these days. So considering the wetland that I have mentioned, that no, there is no requirement of skilled person, but for considering the maintenance, if the maintenance is coming out of the system, we have to entirely come out the with the पूरा बेड जो होता है वो हमको रिमूव करना पड़ता है. दैट बेड हैज टू बी क्लीन्ड अप प्रॉपर्ली. सो ऐसे भी कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं हर एक सिस्टम में, बट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, जो वेस्ट वाटर हमको ये मिलता है, वेस्ट वाटर का क्वालिटी मिलता है, वो मोर और लेस सभी में सिमिलर मिलता है. सो it is all dependent on our tertiary treatment and the maintenance. What is the quality we need. So further इसके बाद में the wastewater is coming. Treated water जो आता है, treated water is we are further using these days for the flushing, where the human touch is not needed for the particular system, and we are using that particular water for the irrigation and watering the landscape as well. कहीं कहीं ये पानी वॉशिंग और व्हीकल वॉशिंग के लिए भी यूटिलाइज होता है. सो हमको अभी यही मेजर कंसर्न यहाँ पे ये है कि आप ट्रीटिंग द वाटर with the proper maintenance, with the proper operating, and further that water has to be properly reused, and the reduction of the domestic water for utilizing for landscaping, for irrigation and flushing should be reduced. That is the major concern and requirement for the particular technologies to be introduced in the market these days. So this is the overview that I could able to mention in the particular presentation. Now I expect few answers, as your students are not giving the answer, but still I would expect some answers. Anybody have any idea how much one person is using the water in one day? कुछ आइडिया है किसी को? कुछ कोई इस पे जवाब दे सकता है कि एक पर्सन को एक दिन में कितना पानी लगता है? Please participants, what is the water requirement for by one person? Participants, please respond करिए, or else you can even type in the chat box. People are not answering. So I would like to mention over here. So according to the regular NBC, I would say the NBC is National Building Code. So we need 135 liter per person per capita in a day. If we are having 5 people at our place. Ma'am, there is a response by Venkat Raman sir. Okay. And he has responded 135 liters. Sir, yeah, I could not able to see the response. Ma'am, should I share my screen? I think. Yeah, please.
If someone wants to talk, that it is more appreciated still. Yes, ma'am. Here, ma'am, Venkatraman sir has responded that 135 liters are required. So we need to understand कि एक पर्सन अगर घर में 4 लोग हैं तो 130 अकॉर्डिंग टू 135 लीटर हाउ मच इज वाटर रिक्वायरमेंट इन आवर पर्टिकुलर डेली डे टू डे and in that particular 135 liter we are wasting 90% of water every day, and that entire water is going into the just into the drains, and we are not utilizing that particular water, and we are saying that our India and our region is facing crisis of water. On what basis we are saying that? If we should be more responsible from our side for towards our particular environment. So again, I would like to answer some questions, or if there is no questions from your side, then I would like to ask you some questions. Participants, if you have any questions, Please speak. There is no you shouldn't be hesitate to while speaking. This is yeah, an interactive session. you can even ask a simplest question, no problem. Yeah, any questions? जो आपने अभी presentation देखा, as you have went through all the technologies and detailing, if you are having some questions on that, yes, it is very much welcome from your side to answer on that. Ma'am, like the new construction areas now have that they have to construct treatment plants in their respective areas. So, ma'am, do you also design for that? Sorry, I'm not getting your questions. Your Um, little bit voice is not. Can you just stop sharing this? That is why I think I'm not getting your voice properly. Now yes, it's clear. ma'am, am I clear now? Yeah, quite clear. Yes, ma'am. Actually, I was asking that nowadays the newer construction areas are like guidelined to have a treatment plant in their specific area itself. So, see, according to the guidelines of CPCB, that Central Pollution Control Board, if your project is generating 50 KLD of wastewater, after if you are generating 50 KLD of wastewater, even if you don't need environmental clearances and all these things, still you have to go for the ST. So that is the requirement of these days. Of course, these days society major residential projects are coming, then hospitals are there, then commercial buildings are there. So all these buildings should design and utilize the water, because these days the corporation has suggested that they'll be supplying the domestic water only, and you have to make your own arrangements from the wastewater, treated wastewater, that is for the flushing and the gardening, and sometimes it is washing as well. So this is the requirement and this is the mandate from the corporation and the government level. That is why we have to introduce the wastewater treatment in the all the residential, commercial, hospitals, all these projects. Anything else? Yeah. Any doubts from the participants, please? Participant, I think they are participant isn't okay. I think participant काफी कुछ study कर चुके हैं already this. Yeah, but at least they can interact, even though they are हाँ, knowledgeable. But interaction तो हो सकता है मैम थोड़ा सा. yes. It feels lively that we हाँ, it ask. feels lively. That is why I'm insisting on that particular thing. That if In fact, participants को अगर कोई new idea है, कोई ऐसी technique जिससे yes, वो aware हो, मुझे it will rather be I really would like to nice. give a task to the students. As we are engineering students, I just wanted to give some task. As we know that various treatment things are there. So that is the further task we have to use. We have to think about is utilization of that treated wastewater. So many projects are like, if you are aware that Pradhan Mantri Awas Yojana projects are coming to the various areas of the particular India. So after treatment of things are there, even if we are giving the treatment, there is problem of utilizing of the water. So even if we are utilizing it for the flushing and gardening, still 40% of water is remaining into the particular system.
every day if it is a 40% of water is remaining in the system, where we can utilize the water. So this is the task I would like to give to you, give to your students कि ये task होना चाहिए कि इसका क्या further utilization हो जिसमें हम natural streams में कम से कम we can say that zero discharge system, we can create what type of system to reach up to the zero discharge system in particular areas where the sewage further drainage lines and sewage lines are not available. So this is the task I would like to give to your students. If they can come up with some good technologies, they can come up with a good solution, that would be really appreciated from my company to introduce that particular system in the means areas where which we are working on. So I think considering all this, this is done from my side. I think थोड़ा सा जल्दी खत्म कर दिया हमने. So, so that your student can get a little bit rest time. Yeah, So, thank you so much, ma'am. yes. Yes, if anybody would like to interact and in fact bring forward कि किस Five तरह से minutes ये जो or else wastewater है. we will end up with the session. Yes, we will be waiting for I think few minutes so that you can at least interact, or else we will have to wind up. So if you can come up with this option that how we can utilize the treated water को जो भी हम सीवेज की बात कर रहे थे अभी, जो सीवेज वाटर है उसे ट्रीट करने के बाद हम कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं. We just want that answer. So I think. Ma'am, in one place the water was used for thermal power plants. We just in the previous lecture, the speaker he was a scientist from East Kerala, and he had enlightened that at present in Nagpur city जो treatment किया जा रहा है उसको फिर जो waste water after treatment is used in the thermal power plant. या पर वो अगर आपको कूलिंग टावर के लिए उसको यूज करना है तो उसका पैरामीटर यू हैव टू अचीव that particular parameter to be particular water quality has to be used for the cooling water. You have to achieve that particular thing. उसके बाद maybe according to the norms we need to we need to understand कि क्या कितने ट्रीटमेंट सिस्टम तक हमको जाना है कि वो पर्टिकुलर वाटर जो है यूटिलाइज कर सकते हैं. सो हर एरिया में थर्मल पावर प्लांट नहीं होता, अलग अलग प्लांट्स भी वहाँ पे होते हैं. So we can use that particular water for the industrial use as well. So these are the actual things that is sustainable water development has to be come up from the students with the new ideas. I would suggest ये थर्मल पावर डेफिनेटली कर सकते हैं, पर उनका जो पैरामीटर होते हैं, उनके जो पैरामीटर को अचीव करना होता है, क्या होता है सर कितना आपको बता पाएगी जरा प्रॉपर्ली. अभी क्या है मैम कि जो सिवेज ट्रीटमेंट अभी जो मैंने 4 ट्रीटमेंट बताए ना उसमें हमारा बीओडी लेस देन 10, सीओडी लेस देन 30, टीएसएस लेस देन 10, ऑयल एंड ग्रीस लेस देन 10 एंड पीएच फ्रॉम 6.5 to 9 ये हो जाता. पर जो हमारे थर्मल पावर पॉइंट है या अपने कूलिंग टावर है जो भी इंडस्ट्रियल यूटिलिटीज के पार्ट है वहां पे बीओडी तो 0 ही चाहिए, सीओडी 0 चाहिए, टीएसएस हो तो वो भी बिलो 1 पीपीएम चाहिए. जैसे कि अदर फैक्टर है टीएसएस टीडीएस जो है टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स जो है वो भी बिलो 5 पीपीएम चाहिए. उसमें अगर बाकी जो टेस्ट होंगे क्योंकि जैसे हमारा रॉ वाटर सोर्स होगा जैसे बोर हो या वेल हो या लेक या रिवर तो उसके हिसाब से बाकी जो ऑर्गेनिक मैटर बोलने से पहले में जो क्या बोलते हैं सॉलिड्स जो सॉलिड्स होते हैं जैसे कि केमिकल वाले भी सॉलिड जो होते हैं अर्सेनिक हो या निकेल हो कॉपर हो ये सब ट्रीटमेंट के लिए अपने ये पूरे जांच करके रॉ में मतलब आफ्टर सीवेज ट्रीटमेंट कितनी वैल्यू है और कूलिंग टावर के जो पैरामीटर इनलेट पैरामीटर लगेंगे उनको उतना रिड्यूस करना पड़ता है. तो उसके आगे भी हम यूएफ लगा सकते हैं, 4-5 स्टेज के आरओ लगा सकते हैं और बाद में ये मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर में जाके भी वहां का जो कंडेंसेशन वाटर है वो हम कूलिंग टावर या थर्मल पावर पॉइंट में यूज कर सकते हैं. सो डिपेंड ऑन एंड यूज हमें वो ट्रीटमेंट भी डिसाइड करनी पड़ती है कि हमें जो भी इस्तेमाल करना है फाइनल एप्लीकेशन का इनलेट सोर्स कितना चाहिए. Right, ma'am. So it can be used in any industry, provided कि हमें ये पता हो कि water की quality requirement कैसी है उस industry के लिए. Yes.
So thank you so much, ma'am. We are deeply enlightened and thankful for your presence. On behalf of the Civil Engineering Department of IPS Academy, I would like to thank both Anuja ma'am and colleague ma'am also. I'm sorry, I cannot recollect your Sankita. name. Her name is Sankita. Okay, Ankita ma'am. Ankita or Sankita ma'am? Sankita. Okay, Sankita ma'am, I'm thankful to you for contributing for the wonderful expert talk. Thank you, Anuja ma'am, for taking out time from your busy schedule and enlightening us. We look forward to meeting you again in some of the other training programs which we might conduct in the future. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you. So the participants are requested to come back at 3:30 p.m. for the next session, and we will take a break for around 10-15 minutes now.